Welcome back to our lecture series of metric spaces. We were discussing topology of a metric space. हमने अभी तक इंटीरियर पॉइंट लिमिट पॉइंट्स को डिस्कस किया है एंड बेस्ड ऑन द डिस्कशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स एंड लिमिट पॉइंट्स वी हैड डिस्कशन ऑफ ओपन सेट एंड क्लोज्ड सेट. Now in this set we are going to discuss bounded set, diameter and then Cantor's theorem. Suppose we are given with the metric space x comma d, then in the respect of this d, what do you mean by bounded set? And then how can we define the diameter of a set? Okay, so let us start this discussion by writing some definitions of bounded set, diameter. Then we are going to discuss the distance between a point and a set, and then distance between two sets. So we are having some definitions. First of all, we are going to have the bounded set. Okay, so let x comma d be a metric space and let capital A be a non-empty subset of x. ठीक है. Now we are going to define first bounded set. Bounded set means we say that the set A is bounded if there exists some m positive such that we can define the distance between any 2 points with this given metric d is always less than equals to this m, and this must be true for all x and y belongs to a. ओके, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एक सेट है a, उसको हम बाउंडेड कब कहेंगे? जब हम इसके किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आइडेंटिफाई करें एंड यू कैन से that distance between any 2 point of this set A is always less than equals to this m. If we are able to identify this m for some set A, then we call this set A is bounded. Okay. Now the moment we have the definition of bounded set, then we can define diameter of A. Diameter of a set. So we can define if A is bounded. A is bounded, then we define the diameter of A as in the form of the distance only, DIAM, diam of A, or we can denote in short it is D of A, and that is the supremum of D of x comma y, and where this x and y are coming from A. Okay, so here you can see we will choose some element. Suppose we have this element and then we have this element. Okay, so here you can see if we identify the distance between any 2 point from the set A, then the distance between these two red dots will be the supremum. So you can see if we see this particular distance, this is the D of A, diameter of A. ठीक है, सो हम इस सेट के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी की आपस में डिस्टेंस डी आइडेंटिफाई करेंगे. द मोमेंट आई से डिस्टेंस, इसका मतलब हम उनके लिए डी फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, और उन सभी में जो सुप्रीमम होगा दैट विल डिफाइन एज द डायमीटर ऑफ दिस सेट ए. ओके, नाउ कम टू द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सेट. ओके, इन केस जैसे हमने यहाँ पर लिया है दैट ए इज बाउंडेड, तब हमने इस डायमीटर को इस तरीके से डिफाइन किया है ना. व्हाट अबाउट द अनबाउंडेड सेट? क्योंकि अनबाउंडेड सेट होगा उस केस में वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द सुप्रीमम एंड हेंस दिस सुप्रीमम विल बी इन्फिनिटी. सो आई कैन से if A is not bounded,
then you can see d of a is equal to infinity. Okay, then come to the distance between a point and a set. So distance between a point and a set. ठीक है, so let x belongs to x, then the distance between x and the set A is defined as d of x comma a, that is equals to infimum of d of x comma a, where this small a is coming from this set A. ठीक है, सो हमने जैसे ही इस सेट के बारे में बात की, सपोज दिस इज आवर सेट ए एंड दीज आर द पॉइंट ऑफ दिस सेट ए. ओके, एंड ऑफ कोर्स हमारा जो एक्स पेरेंट सेट है वो कहीं पर भी हो सकता है. नाउ वी हैव सपोज दिस इज आवर एक्स. We want to identify the distance between this set A and this point A. So here you can see, if you identify the distances, then you can have this distance, then you can have distance from this point and then this point. But you will notice that if we have a point suppose here, then the distance between this x and this point is minimum. Okay, so this red line will define the d of x comma a. ठीक है, तो आप सारे पॉइंट्स की इस x से डिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे, a को वेरी करते जाएंगे और जो भी सारे डिस्टेंस आएंगी उनका इन्फिमम आपने लेना है. सो दैट इन्फिमम डिस्टेंस और द वैल्यू ऑफ d विल डिफाइन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x and the set a. Now on the basis of this discussion we are going to define the distance between two sets. Okay, distance between two sets. So let A is a subset of X and B is a subset of X. Of course ये नॉन एम्प्टी है, तभी ही हम यहाँ पर D डिफाइन करेंगे. ठीक है, let A and B are two non-empty subsets of X, then the distance between A and B is defined as, you can see, d of A comma B, that is equals to infimum of this set d x comma y, where of course this x is coming from A and this y is coming from B. ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा? सपोज वी हैव दिस इज आर A and somewhere suppose this is our B. ठीक है, this is our B and these are the points of A. ठीक है, and these are the points of A. This is our set A. अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से कोई एक पॉइंट चूज कर रहे हैं. सपोज हमने A के पॉइंट को फिक्स किया दिस पॉइंट. ओके, हमने इस पॉइंट के सारे पॉइंट से डिस्टेंस आइडेंटिफाई कर ली और उसको सेट में कंसिडर कर लिया. नाउ वी आर फिक्सिंग दिस पॉइंट और हमने इस पॉइंट की सारे इन पॉइंट से डिस्टेंस आइडेंटिफाई करी और उसको भी इस सेट में रख लिया. सो फॉर एवरी सेट वी आर आइडेंटिफाइंग द डिस्टेंस विद दिस सेट. जब हम इस पॉइंट पर आएंगे, सपोज वी हैव coming to this point, then you can see कि distance between this point and this point is minimum. Okay, if we identify this distance,
देन दिस डिस्टेंस विल डिफाइन, क्योंकि ये इन सभी डिस्टेंसेस में से सबसे कम है, सो दिस विल बी दी डी ऑफ ए कोमा बी, है ना। हम ए के सारे पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे और बी के सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए डी एक्स कोमा वाई टाइप की सारी डिस्टेंसेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और उनमें सबसे मिनिमम जो होगा दैट विल डिफाइन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. You can see if we are choosing this point and this point, then for these 2 point, if we identify d x comma y, then for these one जब हम सारे डिस्टेंसेस से इनको कंपेयर करेंगे तो ये सबसे कम डिस्टेंस आएगी, या फिर इस d की वैल्यू सबसे कम है, सो दैट विल डिफाइंस द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b. ओके, so this is about some definition of in the metric space where D is metric, and then we had defined bounded diameter distance between a point and a set, and then distance between two sets. Okay, now we are coming to the examples where we can understand these topics clearly. So we have examples 2.1.42. okay, it says first one, you can see if you identify the bounded set in R or R square. okay, suppose अगर मैं R की बात करूं then we will have a real line only, और जब हम R square की बात करेंगे then we will have this plane. ओके, हमने कैसे डिफाइन किया है, क्योंकि अगर हम D को यूजुअल मैट्रिक ले लें तो हमने जो डिस्कशन रियल एनालिसिस में किया है वो इसी लाइन के लिए डिस्कशन हो जाएगा. सपोज आई वांट टू डिस्कस दिस सेट. ओके, और अगर वी आर एबल टू आइडेंटिफाई अ इंटरवल जिसमें ये सेट कंप्लीटली लाई करे तो हम इस सेट को बाउंडेड सेट कहेंगे. ओके, कोई भी इंटरवल हो सकता है, ओपन या क्लोज्ड, फाइनाइट होना चाहिए. ओके, कोई भी, जैसे हमने कह दिया कि ये हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर ये कंप्लीट सेट आ रहा है. ऐसे ही हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा सेट है, क्या ये बाउंडेड है, तो हमने इसको कैसे देखा था कि अगर इसको कंटेंट करने वाला है वी कैन आइडेंटिफाई ए स्क्वायर, जिस स्क्वायर में ये सेट कंप्लीटली लाई कर जाए तो हम इस सेट को बाउंडेड सेट कहेंगे. ओके, अब इसमें कंडीशन क्या है कि जो स्क्वायर हम यहाँ पर बना रहे हैं उसकी साइड हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए. राइट, अब हमें पता है कि डी की जो डी मैट्रिक है आर स्क्वायर में, उसको हम स्क्वायर की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, और आर में हम यूजुअल मैट्रिक के थ्रू हम इंटरवल्स की फॉर्म में भी डी को डिफाइन कर सकते हैं. तो इसका मतलब जो हमने बाउंडेड सेट की डेफिनेशन पढ़ी है मैट्रिक स्पेस में, these definitions are consistent with the boundedness in the set of real number R, and then this second copy R square. Okay, that is we want to say. Now come to the next example, that if we talk about the interval 0, इन्फिनिटी. अगर हम रियल लाइन की बात करेंगे तो ये एक अनबाउंडेड सेट है ना, इज नॉट बाउंडेड इन आर, राइट, बट इफ आर is equipped with discrete matrix, then the interval 0, infinity is bounded. राइट, ये कैसे है, क्योंकि जब हम बात करेंगे डिस्क्रीट मैट्रिक्स डी एक्स कोमा वाई की तो इसकी दो ही वैल्यू है, 1 0 और 1. 0 कब है, व्हेन x इक्वल्स टू वाई, और 1 कब है, व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू वाई. ठीक है, तो आप इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, अगर वो दोनों इक्वल है तब d की वैल्यू 0 है, और जब वो इक्वल नहीं है तो उसकी वैल्यू 1 है. इसका मतलब इस सेट के किसी भी मेंबर के बीच में डिस्टेंस एट मोस्ट 1 आ सकती है. इसका मतलब वी हैव द फाइनाइट नंबर m सच दैट d ऑफ x, y इज लेस देन इक्वल्स टू दिस m.
Okay, so you can say for all x comma y from open interval 0 to infinity, the distance d of x comma y is always less than equals to 1. Okay, and thus 0 comma infinity is bounded in discrete metric space. ठीक है. नाउ सपोज वी आर हैविंग अ बाउंड, जैसे हमने एक लेक्चर में डिफाइन किया था बाउंडेड मैट्रिक्स को, तो अगर हम बाउंडेड मैट्रिक्स से इक्विप्ड कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो उसमें भी हर सेट बाउंडेड ही है. कैसे? लेट मी राइट दिस. सपोज कंसीडर R, D, where d of x comma y is equal to x minus y over 1 plus x minus y. ये हमने बाउंडेड मैट्रिक की फॉर्म में डिफाइन किया ही था. ओके, देन यू कैन से देन every subset of R is bounded. ठीक है, कैसे बाउंडेड है? हमें पता है दैट फॉर ऑल x comma y in R, this d of x comma y always lies between 0 and 1. और 1 कब हो सकता है ये? जब इसकी 1 तो होगा ही नहीं, दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1. ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कोई भी हम रियल नंबर लेंगे तो इसके लिए हमेशा हमें m1 की फॉर्म में मिलेगा, सो दैट द डिस्टेंस ऑफ एनी टू रियल नंबर कैन बी बाउंडेड बाई 1. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सी that the distance between any two point of real number with this distance, this is always less than 1. Now if you identify the supremum of d, that is, and if you identify the supremum of all the distances x comma y where this x and y are coming from R, हमें पता है इसकी एट मोस्ट डिस्टेंस 1 हो सकती है, सो दैट सुप्रीमम इज 1. और जब कभी भी हम डिस्टेंसेस का सुप्रीमम लेते हैं सो दैट विल डिफाइंड एज डायमीटर ऑफ R. सो यू कैन सी रियल नंबर सिस्टम का डायमीटर 1 है विद दिस मैट्रिक x minus y over 1 plus x minus y. This is always finite, or you can say bounded matrix between 0 to 1. Okay.